हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम मैथ रिथ यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करता है। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है? तो दिस इज बेसिकली ये बताती है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है दैट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ओके। तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक में हम डेरिवेटिव लिखते हैं किसी इंटीग्रल का, दैट विल बी द सेम फंक्शन। एंड दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू, कैसे हमारे पास एफ वी माइनस एफ ए निकलता है। वो दोनों के हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे और हम उनके प्रूफ्स को भी देखेंगे। ओके। So let's write the first part of the fundamental theorem of integral calculus. So part first is what? So a function fx, if a function fx is continuous, then what? It's continuous in a closed interval. I'm taking it is a comma b. Okay. Then the derivative of the integral from a to x of fx dx is just equal to fx for all x in this interval a comma b. So if function fx is continuous, then derivative of its integral will be equal to the fx again. Okay, so this is the first part of your fundamental theorem of integral calculus. Okay, so let's see कि how we will able to prove this. Okay, तो कैसे इसको प्रूफ लिखेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है। और सो लेट्स राइट द प्रूफ ऑफ इट। हमें कुछ रिजल्ट्स, कुछ थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, उनका यूज करते हुए हम इसका प्रूफ लिखेंगे। तो लेट्स राइट द प्रूफ ऑफ दिस। ओके, सो आई एम टेकिंग x and x plus h are the 2 points from the interval a comma b such that h is tending to 0, h is very small। तो एक अगर हमने x चूज, कोई x पॉइंट चूज करा, तो उसके रिस्पेक्ट में हम एक x प्लस एच दूसरा पॉइंट चूज किया, तो उससे एक इंटरवल बन जाएगा x कामा x प्लस एच, और फिर उस सब इंटरवल में हम काम करेंगे। ओके, तो आई एम जस्ट टेकिंग, तो suppose x and this x plus h, and this h is not very big, so here x and x plus h do 2 points from the interval a comma b, or 2 points, to the interval, that is your a comma b. And also we can have, write a function. So the integral है this one, I'm just taking this equal to some function capital Fx. Okay, so I'm just taking, so let capital Fx is just equal to this integral a to x of fx dx. So हमारे पास अगर हम यहाँ पर f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू निकालना चाहें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? दिस इज आल्सो a टू x प्लस एच एफ एक्स डी एक्स। ओके,
So you can simply say this implies if you are going to calculate capital Fx plus h minus capital Fx is just equal to integration from it is from a to x plus h fx dx, okay, and minus this is from a to x fx dx, okay। सो हमें पता है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कि अगर हम उनके साइन को इंटरचेंज करते हैं, लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन अपेयर होता है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज फ्रॉम ए टू एक्स प्लस एच दैट इज ओके, दिस इज एफ एक्स डी एक्स, एंड ये हमारे पास अब प्लस का हो जाएगा और इसकी लिमिट हमारी इंटरचेंज हो जा रही है, तो दिस विल बी एक्स टू ए और एफ एक्स डी एक्स, ओके। और एक चीज और हमें पता है कि इफ देयर इज सम सेम फंक्शन एंड दिस लिमिट ए टू सी एंड यू आर एडिंग सी टू बी, तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट इट इज ए टू बी। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दिस इज योर एक्स टू ए और दिस इज ए टू एक्स प्लस एच, तो ये लिमिट हो जाएगी एक्स टू एक्स प्लस एच and this is fx ds because function is continuous, so we can write in this way, okay। So this implies this gives you this is f of x plus h minus of capital Fx is just equal to this is limit x to x plus h into fx dx. Got it? So this thing you have. So now since fx is continuous in this closed interval, so we can apply the Lagrange mean value theorem on it. So Lagrange mean value theorem क्या कहती है? So let's write first. So now since fx is continuous in this closed interval a comma b, so you can apply the Lagrange mean value theorem, then by the Lagrange's mean value theorem for integral theorem, there exists some point, there exists a point C, I'm just taking it C, that is between x and x plus h, okay, such that the value of this integral from x to x plus h fx dx is just equal to h times of fc, okay। So from here you can easily see that is क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस एच उसकी वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ओके, इज जस्ट इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ एफ सी। तो फ्रॉम हेयर you can easily see that this is what x plus h minus capital fx divided by h। अब अगर यहां पर हम लिमिट ले लेते हैं h टेंडिंग टू 0, if you are taking limit, this limit h tending to 0, so this is also limit h tending to 0. Now it is clear because this c is less than x plus h, okay, and it is greater than x. If you are taking h is tending to 0, तो you clearly see कि जो हमारा x जो c है that will be tending to x, that will be tending to x, the value of c will becomes x only, okay। So here if h is tending to 0 then this c will be tending to x, okay। So in the left hand side it is nothing, this is derivative of this capital Fx, so this is f dash of x, okay। And in the right hand side you can just write limit, if h is tending to 0 it means this c is tending to x,
of fc, and you simply say this is equal to fx. So this implies, and this f dash x and capital Fx, what it was, the limit from a to x fx dx, यही तो था। इस इंटीग्रल को हमने कैपिटल Fx बोला था। इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ दिस is just equal to fx. So we have proved the result. Okay, we get the result. This is your answer. Got it? So this is the first part of your theorem. Let's second part, that is main part of the theorem. बेसिकली जो हमारे पास लोकल बुक्स टेक्स्ट बुक होते हैं उसमें जो है हमारे पास जो मेन पार्ट है उसी को एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बोला जाता है। बट द इंटीग्रल कैलकुलस कंटेन्स टू पार्ट्स। ओके, तो वन पार्ट वी हैव डिस्कस्ड एंड उसका प्रूफ भी हमने देख लिया है। आइए अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो मेन थ्योरम की बात कर सकते हैं, यू कैन से। तो पार्ट सेकेंड ओके। सो इसको मेन थ्योरम भी कहते तो। सो if if fx is a bounded and integrable function, if fx is bounded and integrable on this interval, close interval a comma b, and if there is a function कैपिटल fx जिसका डेरिवेटिव स्मॉल fx हो रहा है on this a comma b, such that capital F dash x is just equal to small fx. In that case, then the integration from a to b of fx dx is just equal to capital Fv minus of capital Fx. So this is basically finding the value of the integral, है ना। तो इसको हम लोग अपने जो 11th 12th स्टैंडर्ड पे हम लोग पढ़ते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस fx एंड वी देन अप्लाई द फर्स्ट अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट। तो दिस इज बेसिकली अ थ्योरम, ए रिजल्ट। तो वी विल प्रूव दिस रिजल्ट। ओके, तो आइए जरा इसको प्रूव करते हैं कि कैसे हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए कैलकुलेट होती है। ठीक, तो इफ एफ एक्स इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन द close interval a comma b, and if there exists a function capital Fx which is the derivative, which is the integration of fx, या you can say जिसका derivative small fx होता हो, then you can able to find the value of definite integral by the fb minus fa. Okay, so let's prove this theorem, prove this result. So prove. So I'm taking a partition P. Okay, so let P be a partition. Be a partition of interval. This is your a comma b, such that I'm taking points as like this. This is first point x naught and then x1, x2, x3, and so on up to xn just equal to b. Since capital Fx, because its derivative is small fx, so capital Fx is a differentiable function, then it definitely be differentiable in the subintervals. The function is differentiable throughout the interval a comma b,
then it will definitely differentiable in each of the subintervals as well. Okay, so you can just write here, um, since this capital Fx uh, is differentiable on this closed interval a comma b, then it is differentiable in its subintervals, then it is differentiable on each subinterval. इंटरवल अगर हम ये कहें x of I minus 1 and xi. So hence by the definition of the mean value theorem, the differential calculus, the function should be differentiable, then we can able to apply the mean value theorem. Okay, so hence by mean value theorem of differential calculus, there exists some point between these two in this interval. A point, I'm just taking this point is ti in this interval xi minus 1 up to xi, such that you know that is f of xi minus f of xi minus 1 is just equal to xi minus 1 into f dash of ti. F dash of ti. Okay, wait. Okay, so this will be by using the mean value theorem. So there exists some points that the derivative will be equal to in this way. Okay, so clearly you know that the derivative is denoted by f f dash x is just equal to fx. Okay, so you can have in this, and I am taking this is your delta of x I. Okay, so this will be, it equals to uh, f of xi minus f of xi minus 1 is just equal to uh, f of ti into delta of xi. If you're taking the summation of this, okay, so this is I equals to 1 to n, and this is also summation I equals to 1 to n. तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं I equals to 1, तो दिस इज f of x1 माइनस f of x0 plus f of x2 minus f of x1 and so on up to in the last f of xn minus f of xn minus 1 is just equal to summation I equals to 1 to n of f of ti into delta of x. क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम कैंसिल इट आउट करेंगे तो ये इससे कैंसिल, इस तरीके से सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस इंप्लाइज योर व्हाट, यहाँ पर बचेगा एफ ऑफ एक्स एन, ये प्लस का बचेगा ये वाला और ये टर्म बचेगा निगेटिव का, एफ ऑफ एक्स नॉट. ओके, एंड इट दैट विल बी इक्वल टू summation I is equals to 1 to n, this is f of ti into delta of xi. If you are taking a partition, ठीक है, उसका जो पार्टीशन का जो नॉर्म है
दैट इज वेरी वेरी लेस। तो उस केस में ये चीज कर हमारी टेंड हो जाएगी, दिस विल बी टेंडिंग टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी of fx dx as norm of p is tending to 0. So from here, this is your fb actually, this is your fa, and that will be equal to a to b of fx dx. Okay, so this is your answer. That means integration, finite integration a to b of fx dx will be equal to fv minus fa. Okay, clear about it? Okay. So because we know that the derivative of fx is just equal to small fx, okay? So this capital fx is known as primitive. It is called primitive of primitive of small fx. Okay. So thus remember this is called primitive of small fx. Okay. So this is the result. This is the value of the definite integral. So this is the fundamental theorem of integral calculus. So I think you got how we will prove these theorems. Okay, and also remember the theorems as well. The statement of the theorem you should be remember. Okay, thank you so much for watching, and we will meet in the next lecture with the next topic. Thank you so much.